स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. क्यों भाई, स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो शुरू करते हैं। In the last lecture, we discussed about RIP, Routing Information Protocol, which is a distance vector routing protocol. Based on Bellman-Ford algorithm. So we have already seen how the table finally is created, and as from the beginning I am saying that for creation of the routing table, whether it is done by the administrator statically or if done by the algorithm using knowledge, dynamically through algorithm, finally the topology of the network should be known either to the administrator or to the algorithm, and that knowledge of topology is used to create that routing table, and the final output is the routing table of these algorithms. So let us see now today two algorithms. One is OSPF, which is generally used for inside the LAN, and then in the end we'll see border gateway protocol, which is used over the internet by the ISPs to create the routing tables dynamically and to the management of those routing tables. Okay, so we'll see border gateway protocol, which is quite similar to RIP. Okay, when we will be discussing border gateway protocol, you can see that there are some similarities with RIP. Okay, and first let us discuss the OSPF. It is OSPF, which is a link state routing protocol. Link state. The previous one was distance vector. This is link state. It is known as link state because the information which is passed by a router to other routers is about the links which are directly connected to that particular router. If a router R1 is connecting to two links, then the information which is passed by R1 is about those two links which are directly connected there with that router. It do not passes the other the information about other links which are indirectly connected or other networks which are indirectly connected. Okay, so only directly connected routers, only directly connected links, that information of a particular router is passed. Okay, so that's why it is known as link state routing. OSPF, the name is open shortest path first. Okay, so it's an open standard and shortest path first. If try to find out the shortest path once the topology of the network is known. Okay, it uses the Kestra algorithm for finding out the shortest path through the knowledge of the topology. I would not be discussing Kestra algorithm. We'll be using it directly to tell you that the table has been created. Okay, so that will be an assignment to you, that you just refresh that Kestra algorithm, which you may have gone through in the algorithm
subject. Okay, so it uses that algorithm for finding out the shortest path, obviously through the knowledge of the network topology. That is always required. The topology, knowledge of the topology is always required. So this is what OSPF is. As I said, in RIP also, we were seeing that routers, what they do, exchange information, right? And what information is to be exchanged? What information? That is about the neighbors, or you can say the directly connected link. Okay, so what information? That is the information about neighbors, right? Neighbors only. Or you can say it's a directly connected links. Directly connected links. Okay. So that is the information, and to whom it is, किसको भेजते हैं? If you remember in RIP, the information was exchanged to the connected routers. Okay, but here the information is flooded to all the routers. Okay, so a term is used, flooding. Right? We'll shortly see what this means. Flooded to all routers of the LAN or of the network. To all routers of network. And then when the information is exchanged, and information is exchanged whenever in RIP, you may have seen that after every 30 seconds, a router shares the information to other routers. But here, whenever there is a change in state of link or a link state, that means whenever there is a change in the state of link, like link is up or it is down, neighbor router is up or down, then the information is exchanged. So these three things we already seen in RIP, that what information in RIP? In RIP, what a router, whatever information that router is having about the topology, whether it is a direct connection, connected link, or indirectly connected link, right? When I'm saying link, that includes the connected and directly connected and indirectly connected routers, and then directly connected and indirectly connected subnets. Okay. So in RIP that was there, but here you can see that only connected routers, connected neighbors, connected links, the information about that is shared. To whom? In RIP, the connected routers. Okay, whatever were the neighboring routers of a particular router, to them the information is shared. But here it is flooded to all the routers of the network. So whatever number of routers are there in the LAN, to all those routers the information is flooded. And when it is done in RIP after 30 seconds, in OSPF, whenever there is a change in the state of a link, the link is down or up, okay, a router is down or up,
connected to that link, and then the information is exchanged. So this was okay. And for exchanging the information in RIP, we were using UDP at port number 520. So okay, but here in OSPF, the IP protocol is used for exchange of information. It uses protocol field. If you remember, there was a protocol field in अभी IP का मैंने header discuss नहीं किया है, but जो Ethernet का header था वहाँ पर एक protocol field होता था कि जो higher layer है वो कौन सी protocol है. So यहाँ पर भी protocol field होता है IP में. So that protocol field number, protocol field number 89 is used when information related to OSPF is exchanged. So IP packet is directly used, no TCP or UDP is used in OSPF. We'll see that UDP, we have seen already UDP is used in RIP, and we will see in border gateway protocol, TCP is used for exchange of information. But here in OSPF, IP packet is used. The only thing is the protocol field number is 89 in IP. Okay, and directly it is used. So that is there. Now, let me tell you the packet when a router has to flood the information to other routers, when a router has to supply the information to other router, it uses a packet, and that packet is known as the format of the packet. That packet is we used to call it link state packet, LSP. A link state packet. Link state packet. So this packet is used to share the information to different routers. When I'm saying that the information is flooded to all the routers, so that means a packet is prepared, which is a link state packet, and that packet is flooded, is sent to all the routers of the network. So what are the fields in LSP? There are 5 fields. One is the identification number. So you can see that this is the LSP packet, and that contains, as I said, one is the ID, the other one is sequence number. Sequence number. So whenever a router sends a packet, a LSP packet, it puts a sequence number. Okay, ID is generally the address of the router. So whenever a router is sending, so to identify that this packet has been sent by this particular router, the address of the router is included here. Okay, so that is the ID of the router or identification number of that router. Then the sequence number. So router can send, say it has sent 10 packets. Okay, first packet, then after some time second packet, if some change has taken place, the third packet, fourth packet. In every packet, the sequence number will change. So from one router, there are 10 packets which has already been sent. So every packet will contain a different sequence number. ID and sequence number, these two fields are used for controlling the flooding information. The information which is flooded, the packet is flooded into the network. So we'll see that what is the meaning of flooding. Flooding means when the packet is transferred, is received by a router, what it do, it transfers that packet to all outgoing links, except the one from which is from where it is receiving the packet. Okay, so when it transfers the packet to all outgoing links, it do not do anything else. So there is a possibility that some routers receive multiple copies of the same packet. So how to find out that this is the same packet?
this ID and sequence number tell that this is the same packet which that router may have received. So if router is receiving 3-4 copies of the same packet, then what it has to do, it do not forward those copies. Otherwise, the network get flooded. Okay. So to control that flooding, फ्लड का मतलब होता है बाढ़, है ना, तो वो पैकेट्स की जो बाढ़ है उसको कंट्रोल करने के लिए, राइट, उसको कंट्रोल करना है, तो ये दो फील्ड यूज किए जाते हैं, किस राउटर ने भेजा है और उस राउटर, क्योंकि वो राउटर अलग अलग पैकेट भेज सकता है, तो सीक्वेंस नंबर यूनिकली बताता है कि इस राउटर ने का ये पैकेट नंबर है. तो द राउटर विच हैज रिसीव, जिसने मल्टीपल कॉपी रिसीव की है, दूसरी तीसरी चौथी एक सेम पैकेट की, तो वो एक ही पैकेट को फॉरवर्ड करता है, बाकी सबको रिजेक्ट कर देता है, राइट. अदर कॉपीज आर रिजेक्टेड, राइट. इट डू नॉट गोज ऑन फॉरवर्डिंग देम अगेन एंड अगेन. So these two fields are used. I will be telling that कि फ्लडिंग में कैसे पैकेट रिजेक्ट होता है, अभी बताता हूँ उसको एग्जांपल लेके. तो ये दो फील्ड हो गए, और बाकी तीन फील्ड जो है लिंक की इंफॉर्मेशन है. दो फील्ड इसकी हैं और तीन फील्ड बाकी जो है, दे आर द इंफॉर्मेशन ऑफ द लिंक. सी हियर, now the one is the network number or destination number, network number. So that is about the, जो भी डेस्टिनेशन नंबर है, जो भी कनेक्टेड नेटवर्क है, सबनेट है, उनका आईडी है, कनेक्टेड सबनेट का नंबर है. Okay. And then there was a field which is known as cost. In RIP, the cost is always in the term of distance. But in OSPF, cost can include price which is to be paid for using the link. It can include traffic. Maybe if we want to include traffic over the network, then this parameter can include traffic also for calculation of the cost. The reliability, whether link is reliable or not, right? That can also be included. And obviously the distance is one parameter which can be. Okay, so cost includes different parameter through which it can be calculated. Okay, so the cost is there. The simplest one is only distance. RIP uses only distance, no other parameter for calculation of the cost. तो लिंक की कॉस्ट RIP में केवल डिस्टेंस है, नंबर ऑफ हॉप है, एक हॉप है कि दो हॉप की तीन हॉप. पर यहाँ पे आप कॉस्ट में और चीजें भी इंक्लूड कर सकते हैं, और पैरामीटर भी इंक्लूड कर सकते हैं, ट्रैफिक को इंक्लूड कर सकते हैं, रिलायबिलिटी को इंक्लूड कर सकते हैं, प्राइस को इंक्लूड कर सकते हैं. ओके, आप कह सकते हैं कि डायनेमिकली चेंज हो रहा है ट्रैफिक और डायनेमिकली रिलायबिलिटी चेंज हो रही है, तो क्या उसको इंक्लूड करें? आइडियली यस, बट जनरली आप ट्रैफिक इंक्लूड करते हैं तो डायनेमिक ट्रैफिक जनरली इंक्लूड नहीं किया जाता है. स्टैटिक एक बार कर दिया या रिलायबिलिटी आपने एक बार कर दी, तो उसको चेंज जनरली नहीं किया जाता है प्रैक्टिस में. आइडियली तो ठीक है, आइडियली तो आप कह सकते हैं कि हम ट्रैफिक भी इंक्लूड करेंगे और सब चीज इंक्लूड करेंगे. प्रॉब्ली इतना नेटवर्क मैंने आप लोगों को जितना पढ़ा लिया उसमें एक दो बार तो बताया ही होगा कि जहाँ पे हम बहुत ज्यादा पैरामीटर्स को इंक्लूड कर देते हैं वो आइडियली तो ठीक है, और चीजें आप कह सकते हैं कि ये अब ऑप्टिमाइज हो गया और भला भला, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में जब यूज करते हैं तो वो उतना यूज होता नहीं है. वो जनरली आप जब हम कहेंगे ये तो भाई ये तो बढ़िया नहीं है, ये तो ऑप्टिमम नहीं है, हाँ ठीक है, पर वो यूज होता नहीं है. सिंपल रहे जितनी टेक्नोलॉजी उतनी ही ज्यादा यूज होती है. ओके, जो ईथरनेट वाली टेक्नोलॉजी पॉपुलर ही इसलिए हुई है क्योंकि वो सिंपलेस्ट थी, वरना टोकन रिंग भी था और
other type of protocols were there. वो ज्यादा फेयर थे. इथरनेट तो फेयर नहीं था ना. इथरनेट ने तो कहा कि भाई आपको चाहिए लिंक, शेयर लिंक को एक्सेस, तो आप बस ट्रांसफर कर दीजिए और कोशिश करिए कि प्रोबेबिलिटी कम रहे कोलिजन की. बस इतना ही तो इथरनेट ने कहा. जबकि आपकी टोकन रिंग है, उसमें आप, मुझे लगता है कि टोकन रिंग मैंने तुम लोग को बताया कि नहीं, है ना. तो बट उसमें ज्यादा फेयर है कि शेयरिंग कैसी हो, तो उसमें ज्यादा फेयर है कि आप कंट्रोल कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि अच्छा आप तुम एक्सेस कर लो, अब तुम एक्सेस कर लो, लाइक दिस. ओके. बट वो सही, जब टेक्नोलॉजी सिंपल रहती है तो यूजेबल ज्यादा होती है, वो ज्यादा चलती भी है और पॉपुलर हो जाती है. और जितनी ज्यादा आप उसको कहेंगे कि अब तो ये ऑप्टिमाइज हो गई, वो रोबस्ट नहीं हो पाती एक्चुअली. उसका एक ये फ्लॉ होता है हमेशा. जब भी आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज करेंगे तो उसमें इतना पैरामीटर जुड़ जाते हैं कि बिकम्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, और वो फ्लेक्सिबल नहीं रहती. तो या कहना चाहिए रोबस्ट नहीं रहती उतनी. फ्लेक्सिबल तो शायद नॉट नो कि सही टर्म है कि नहीं उसको यूज करने के लिए, बट रोबस्टनेस कम हो जाती है उसकी टेक्नोलॉजी की. और वो जितनी रोबस्टनेस कम होती है तो उतना ही फाइंड आउट कि भाई इट्स नॉट becoming popular, not becoming usable. ठीक है, that's fine कि in a particular environment, in a very controlled environment, somewhere you need that, that can be used and is used, but for a general use, it is not preferable generally. So cost is that, as I said, can include different parameters. Different parameters include कर सकते हैं, लेकिन वो भी dynamic ना रहे, थोड़े स्टैटिक ही रहे. आपने ट्रैफिक एक लिंक पे सेट कर दिया कि भाई ठीक है ये इस पे ट्रैफिक जनरली हाई रहता है, तो आप उसको डायनेमिक करेंगे तो प्रॉब्लम होती है. वो इतने पैरामीटर ऐड हो जाते हैं कि दिक्कत होने लगती है कैलकुलेशन. मतलब राउटर जो है वही कैलकुलेट कर रहा है बजाय अपना काम करने के. दैट इज नॉट प्रिफरेबल. ओके. देन नेबरिंग राउटर. Router. So that is the address of the neighboring router. जो भी लिंक पे डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है उसका एड्रेस. So this is what the LSP packet looks like. तो ये एक पैकेट बनाता है राउटर और उसको फिर फ्लड कर देता है. और फ्लडिंग करता है. और फ्लडिंग को कंट्रोल कैसे करते हैं? आईडी और सीक्वेंस नंबर यूज करके. नाउ व्हाट हैपेंस? अभी तक इतना बात हो गई कि एक पैकेट बनाया जो कि उसके लिंक की स्टेट बता रहा है कि जो कनेक्टेड लिंक है उनकी कॉस्ट कितनी है और कौन दूसरा राउटर दूसरे साइड पे कनेक्टेड है. ये बता रहा है. Now this packet is flooded to all the routers. So what happens? Every router receives a packet from all other routers of the network, and this knowledge creates a database, right? These packets which has been received by different routers, by a particular router, so those packets create a database over a particular router or on every router, and finally every router has received packets from all the other routers of the network, and in this fashion it prepares our database through these packets. So every router now have a database, and that database refers or tells topology of the network. So every router on that database which it has obtained or which it has created through these packets which it is receiving through flooding in OSPF. Okay, what it do through that database? The topology is there, and using that topology, it applies this Kestra algorithm
over that database, every router applies Dijkstra's algorithm over that database which it has obtained, okay, and then creates the routing table which gives the shortest path to a particular destination. And this is the whole process. Okay. So you can, if you want to write, you can write that. Okay. What each router receives LSP from other routers. And then each router creates link state database using LSPs. जितने भी LSP रिसीव हुए, पैकेट रिसीव हुए डिफरेंट राउटर्स के, तो एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया. And then what happens? This link state database, what it do? It represent network topology, right? And then what it do? What each router do? Each router create routing table using link state database topology plus Dijkstra algorithm. A routing table is created. And what does Dijkstra algorithm do? It gives shortest path to each destination network. तो जो भी डेस्टिनेशन नेटवर्क है which are the part of the LSP, ये जो नेटवर्क नंबर है, those are destination networks, right? So every destination network from this particular router on which the table has been created using this algorithm, we get the shortest path. And obviously the shortest path is in terms of cost. So this is the way OSPF works. Now let us take an example. पहले तो flooding वाला दिखा देता हूँ और फिर उसी एग्जाम्पल को टेबल बनाने के लिए, जैसा मैंने कहा कि डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये आप लोग अपने आप पढ़िए, टेक इट एज एन असाइनमेंट एंड डू इट, रिवाइज कर लीजिए उसको जो आपने पढ़ा है एल्गोरिथम. सो नाउ वी क्रिएट अ फिगर टू टेल कि भाई ये फ्लडिंग कैसे स्टॉप होती है. सिंपल आइडिया है. सपोज देयर आर 5 राउटर्स, ये R1, इसी पे मैं आप लोगों को वो क्रिएट बता दूंगा. देन R2, क्योंकि राउटर है तो इसको चाहे आप गोलियां बना के कर लीजिए, नहीं तो R3,
नोड को जनरली इस तरह से सर्किल बनाते हैं, इसको थोड़ा वो वैसे कर लेते हैं। और जब राउटर बना रहे हैं तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इससे। अरे भाई 1 मिनट होल्ड करना। तो इसको मिटा दिया। अच्छा, तो अब इसको माइक ऑन कर रखा है मैंने कि ऑफ है? नहीं, ऑन है। सुनाई पड़ रहा है भाई? अच्छा, रबर तो हट गई भाई, इसको हटाओ। चलो, इसको बनाते वक्त ये R1, इसको बजाय सर्किल जनरली नोड बनाएगी ना, R2, R3 के, R4, 4 राउटर हो गए और एक राउटर ही हो गया R5। ओके, खाली फ्लडिंग बता रहा हूं आपको कि कैसे रोकेंगे। तो सपोज R1 sends a packet P1, so we'll send P1 to here, यहाँ भेजा उसने P1 को, और P1 ये दो आउटगोइंग लिंक है। ओके, P2 नहीं, P1, सॉरी, P1। So packet P1 has been sent by R1. Okay, so R1 जो ID होगी उसमें R1 रहेगी और पैकेट नंबर है, तो इसको आप P1 कह सकते हैं। तो ID ये हो गया और सीक्वेंस नंबर ये हो गया पैकेट का, P1 का। तो दिस इज P1, R2 और R5 हो गया। Now as I said, suppose R2 and R5 are connected here like this, ऐसा लिंक कनेक्शन है। Now as I said, what happens? The P1 is to be flooded in the network. The flooding करने का तरीका क्या है? R1 ने पैकेट भेज दिया आउटगोइंग लिंक्स को। Now R2 and R5 have received P1. What they do, they put it into the buffer and they store कि हाँ ये पैकेट हमने रिसीव किया है। And then what they do, they forward that packet immediately to all outgoing links. So R1 will forward the packet P1 to R3 and R5. Right? What R5 will do? R5 have also received P1, so it will forward the packet P1 to R4 and outgoing link ये वाला भी है, which is going towards R1, so P1 को इधर भी forward कर दिया. Now you can see that P1 is going to be received by R5 again, and this P1 which is sent by R5 is going to be received by R2 again. So R2 and R5 are receiving P1 again. They are receiving 2 copies of P1. So what they do, they have already seen the first copy. This means they store that, they have seen this packet. They store this information, right? Because then only they can find out, yes, this had already been seen. Now what they do, when the second copy comes, they check कि ID क्या है, ID R1, sequence number P1, so they rejects. So R2 rejects P1 and R5 rejects P1, right? R4 and R3 receives P1. Obviously, R3 or R4 also do the same thing. They forward it. So R3 forwarded P1 here, R4 forwarded P1 here. And as they have already seen that, so R3 rejects P1 and R4 rejects P1. And the flooding finishes. क्योंकि अब कोई फ्लड नहीं कर रहा है पैकेट को। एक बार जो आपने जिस पैकेट को आप ने ऑलरेडी सीन है,
if you are receiving another copy of that packet, so what you are doing, you are just rejecting that packet and not flooding it anywhere. So the flooding finishes in this fashion. So this is generally known as controlled flooding. तो फ्लडिंग है लेकिन कंट्रोल है, क्योंकि वो पैकेट हमेशा नहीं घूमता रहेगा. जब भी मल्टीपल कॉपी कोई राउटर रिसीव करेगा तो उसको रिजेक्ट कर देगा. ओके, दिस इज कंट्रोल फ्लडिंग व्हिच इज यूज्ड इन OSPF to transfer a packet of one router to all other routers. RIP में फर्क था. RIP में अगल बगल ट्रांसफर किया पैकेट को, पहले वो क्या करता है, अपनी टेबल को अपडेट करता है, और जब टेबल अपडेट हुई, ठीक है, 30 सेकेंड बाद हो सकता है वो अपडेट हो जाए, हो सकता है ना हो. एनीवे, अगर नहीं हुई तो पुरानी टेबल भेज देगा. अगर अपडेट कर ली है उसने तब तक 30 सेकेंड से पहले, so what it will do, it will send that updated table to the nearby router. So in RIP also the information passes to all the routers, but the passing of the information is slow. Immediately forward नहीं करता है, पहले अपनी टेबल को अपडेट करेगा और 30 सेकेंड का वेट करेगा. Yes, obviously generally 30 सेकेंड के वेट में वो टेबल अपडेट कर लेगा and then will forward that. So in that process of forwarding a particular information to the whole network is slow in RIP. In OSPF वो टेबल कुछ अपडेट नहीं करता, खाली पैकेट उसने स्टोर किया, ये इंफॉर्मेशन कि हाँ ये पैकेट उसने देख लिया है, इतनी स्टोर की और उसको फॉरवर्ड कर दिया. That's it. Now let us see topology, the same topology, and let us create a database of this network. तो पहले देखते हैं टोपोलॉजी. टोपोलॉजी सेम ही है. We have R1. Okay, R1 is connecting to R2. R2 and R2 is connecting, and this is say subnet 1. हम लोगों ने सबनेट लिया था ना, सबनेट 0, सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3, 202.141.55 ये वाला एड्रेस लिया था. 202.141.55.0/24, which was divided into 8 subnets. Okay, /27 यूज करके, तो वही वाले सबनेट्स हैं. Now this is connected to R3 and then R4. ये S1 था, ये S2 है. This is S3. S1, S2, S3 लिख रहा हूँ मैं. प्रीफिक्सेस नहीं लिख रहा. लाइक S1 का 32 था, S2 का 64 था, S3 का 96 था. Then R5. ओके, ये वाला लिंक हटा दिया मैंने, R2 to R5 सिंपल रखने के लिए इसको. और ये R5 वाला जो सबनेट है, ये दिस इज S5 एंड R5 to R4 जो है ये S4 है. Now let me write down the cost of this link. S1 की मान लीजिए 3 है, S2 suppose it is 2, S3 suppose the cost of the link is 1. As I said, the cost is going to be calculated by some other factors including that distance. 3 is S4 and S5 वाली जो लिंक है इसकी कॉस्ट हो गई 4 suppose. Now let us prepare different LSPs. जो अलग अलग LSPs हैं वो देख लेते हैं. So LSP of R1, say that is going to be
a packet which you can say R1 P1 if I name that, क्योंकि हर एक का पैकेट अलग नाम करना है उसको, तो P1 ना करके अब उसको R1 P1 R2 P2 P1 R3 P1 इस तरह से कर लेंगे, ठीक है. So the LSP will be what? This will be the LSP for R1 P1. R1 is the source sequence number 1. S1 is जो लिंक है S1 वाला, कॉस्ट है उसकी 3, और नेक्स्ट राउटर कौन है S1 वाले लिंक पर? R2. ठीक. सिमिलरली जो दूसरा लिंक है कनेक्टेड वाला, तो R1 1 सीक्वेंस नंबर 1 ही है, आईडी R1, और लिंक हो गया S5 राइट. कॉस्ट हो गई इस लिंक की 4, एंड नेक्स्ट राउटर हो गया R5 राइट. So this is, now let us write the link state packet of R2, which you can say as R2 P1. इसको आप सीधे ही लिख देते हैं. So R2 1, ठीक. अब लिंक एक इधर है R2 का, दो लिंक है, एक R1 को कनेक्ट कर रहा है, the other one is connecting to R3. तो R1 को जो कनेक्ट कर रहा है that will be S1, और इसकी कॉस्ट है 3, एंड नेक्स्ट राउटर इज R1, और R2 सीक्वेंस नंबर 1, and link is S2, the right side link of R2. The cost is 2, and R3 is the next router. तो ये LSP हो गया R2 का. अब देखिए LSP of R3, that is R3 और पैकेट नंबर 1 of R3. तो इसको R3 P1 कर दिया है जिससे कि कंफ्यूजन ना हो अलग अलग पैकेट्स में. तो दिस इज R3 के दो लिंक हैं, towards R2 and towards R4. ठीक. बीच के लिंक इसलिए हटा दिए कि थोड़ा सिंपल रहे, बाकी आप लोग लगा लीजिएगा बात को. लिंक R3 सीक्वेंस नंबर 1, सबनेट है S2, कॉस्ट है 2, और नेक्स्ट स्टॉप है R2 राइट, R3 का. और R3 सीक्वेंस नंबर 1, ये पूरा एक ही पैकेट है. इसको मैंने इसमें कवर नहीं किया है, ये पूरा का पूरा दोनों भाई जितनी भी लिंक है उनकी इंफॉर्मेशन है पैकेट में, तो ये पूरी एक ही पैकेट है राइट. R3 सबनेट नंबर S3, और S3 का जो R4 से कनेक्ट कर रहा है उसकी कॉस्ट है 1, और नेक्स्ट स्टॉप है R4. ये R3 का LSP हो गया. अब LSP देखिए R4 का, R4 R स्मॉल R4 एंड P1. R4 का पैकेट P1. So R4 is connecting to R5 and R3. So create R4 sequence number 1 and S3 और कॉस्ट कितनी हो गई 1 और R3, and then R4 sequence number 1, S3 का हो गया S4, और कॉस्ट हो गई 3, और नेक्स्ट राउटर हो गया R5, and then LSP of R5 देखिए
which is small r5 and packet number P1. So this is R5 1 और एक तरफ हो गया connected R5 R4 से, तो S3 और cost हो गई 3 and next stop हो गया R4 and R5 that is the ID, sequence number is 1 और दूसरा side हो गया R5 का that is S5. सर यहाँ S3 नहीं होगा, it should be S4. अच्छा ये वाला S4 होगा, जाओ इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाला ना, ऊपर वाला Yes sir. ये वाला S4 है ना, हाँ वो S4 है, सॉरी ये हो गया S4, हाँ ये S5 आ गया and the cost is 4 and next router is R1. Okay, so now this is the database. इसको एक पैकेट है और this packet is going to be received by every node. So R1 will be having the same database. ये सारी की सारी कितनी रो हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rows. These 10 rows will be there in database which R1 is having, which R2 is having, R3 is having, R4 and R5. So every router will have the same database. Now what they do, they apply on this database this Kestra algorithm, right, and generate the routing table. So on this routing table, on this database, everyone applies this Kestra algorithm and they generate routing table. Like in R1, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, आप लोग generate करिएगा. Destination, cost, next stop. S1 is the destination, cost is 3, next stop direct connection. Then S5, S2, cost is 5. For S2, the next stop is R2. Then S3, cost is 6. And next stop is R2. Then S4, cost is 7. And next stop is R5. And then S5, cost is 4. And this is a direct connection. So this will be the routing table for router R1 in this network. So this is how OSPF creates routing table, and you can see that somehow a particular router is needing information from other routers because every router knows its directly connected links. The similar case was there in RIP also. Okay. But in RIP, what we were doing, whatever was in the routing table of a particular router, that we were advertising. So direct link कने हो या indirect link को दोनों advertise कर रहे हैं. यहाँ पे केवल direct link advertise हो रहा है. Okay. And in this fashion, every router gets the whole information, the information about the whole topology of the network, and can apply the algorithm to find out the routing table of that particular router. So this is how OSPF works.
ठीक है, तो इसके बाद बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल देखते हैं, 5 मिनट का गैप कर लेते हैं, फिर किसी का क्वेश्चन हो कुछ तो बताए। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन लेट मी नो दैट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नहीं है तो 5 मिनट का गैप कर लेते हैं, फिर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल देखते हैं। कोई पूछ रहा था क्या क्वेश्चन? एनीबॉडी? नहीं है? क्या दीपांशु तुम पूछ रहे हो क्या कुछ? तुम्हारा माइक ऑफ है लगता है, अगर पूछ रहे हो तो। नहीं तो कोई बात नहीं। सर हाँ एक्चुअली सर आई मीन जो इस तरीके से करते हैं सर उसका दूसरा नाम होता है लाइक फ्लॉड बॉर्सल एल्गोरिदम। आई मीन फिर डिस्ट्रा क्यों नाम रखा है इसका? नाम कहाँ कौन सा रखा है, पहले मेथड समझ लो क्या है और कैसे हो रहा है, वो बात को डिस्कस कर लेंगे, है ना। कुछ और ओके नाम अगर रखा हुआ है तो देख लेंगे उसको। OSPF से नहीं मिल रहा है? हाँ वो ठीक है, वैसे ही पूछा। हाँ, OSPF से भी तो मिल रहा होगा ना, दूसरा नाम चलो देख लेंगे बात को। एक्चुअली क्या है कि जैसे RIP है, तो RIP में भी जो बेसिक एल्गोरिथम है वो डिस्टेंस वेक्टर का एल्गोरिथम है, बिलमन फोर्ड का एल्गोरिथम उसने बनाया था, वो उसी के बेस पे है वो RIP। तो एक है आपका कि कोई बेस है जिसका जो कभी एल्गोरिथम ऑलरेडी प्रेजेंट था, आपने उसको इंटरनेट में एक काम करने के लिए यूज कर लिया, है ना। तो हम अगर कहेंगे कि इसका बेसिक एल्गोरिथम तो वही है, बिलमन फोर्ड है, बिलमन फोर्ड उसका RIP का। अब आपका वही नहीं, ये RIP नहीं है, ये वो है, डिपेंड, है ना। तो उसको देख लेंगे, बेसिक फंडामेंटल समझ लो। नाम तो चलो ठीक है, OSPF से तो मिलेगा ही सब जगह, और भी अगर कुछ होगा तो हो सकता है पर्सन जिसने सब प्रपोज किया हो, कई बार वो भी नाम यूज हो जाता है। आई डू नॉट नो दैट एट दिस मोमेंट OSPF वाले के लिए, ठीक है, तो उसको देख लेंगे। और कुछ, और कोई क्वेश्चन? चलो अगर क्वेश्चन नहीं है तो 5 मिनट का गैप कर लेते हैं, फिर बात करते हैं।
हाँ भाई, तो अब देखते हैं बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो माइक ऑन कर लिया ना। और तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, there is a term which is used with border gateway protocol that is known as AS. AS is for autonomous system. Autonomous system means a group of routers under same administrative control. Same administrative control. Like if I say one ISP like BSNL, okay, so all the routers which belongs to BSNL, they form a single AS. Okay, so all the routers of BSNL are under the administrative control of BSNL. Okay, so one ISP or a particular organization, all the routers of that are under one administrative control. So that forms a AS. Generally, ISPs used to get the AS. Okay, as I said, that BSP is used as routing protocol, standard routing protocol for preparation of routing tables and packet forwarding over the internet. तो इंटरनेट पे रूटिंग और पैकेट फॉरवर्डिंग के लिए लोग जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो रूटिंग टेबल्स प्रिपेयर करने के लिए बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है. तो AS is that term, and every generally ISP obtains a AS number. So that AS number is allocated by the same organization which allocates IP addresses, and the name of that organization is ICANN, International Cooperation for Assigned Name and Numbers. So IP address भी allocate ICANN करता है और AS नंबर भी ICANN करता है, और आई थिंक जो आपका डोमेन नेम भी है वो भी ICANN करता है. So this is known as International Corporation for Assigned Name and Numbers, ICANN. Okay, and then this is a term which is used, and what we border gateway protocol do, it as I said, different routers are there, so it manages routing tables which contains entries in lakhs somewhere.
So the routing table entries which are managed by border gateway protocol, okay, so use routing table entries. And as I said, it is used over internet, so it actually glue everything together. Glues everything together over internet. Okay. The exchange of information is here also in border gateway protocol. The information is exchanged. And for exchanging the information between different routers, TCP connection is used at port number 179. 179. Okay. So that for exchanging the information it is used. And we generally have two versions or two protocols, border gateway protocol. One is known as external border gateway protocol, which is used to between different routers of different AS, between routers of different AS, और दूसरा होता है internal border gateway protocol, like one ISP is using to exchange the information between routers of the same AS. So that means the routers of same AS. तो एक ही ISP के अंदर जो routers हैं उनकी information exchange के लिए internal border gateway protocol use करते हैं और external border gateway. Okay. And border gateway protocol, this allows each subnet, please remember each subnet, it do not include private IP address subnets. Please remember, private IP address subnets has nothing to do with the routing at the internet. Their packet is not forwarded. Okay. So when I am saying each subnet, this means public subnets. Okay. To advertise its existence to rest of internet. Okay, so every subnet can be known to rest of internet. That is assured by border gateway protocol. So it allows every subnet to advertisement its existence to rest of the internet. That happens in border gateway protocol, and that's why the routers which are managed by through border gateway protocol, they contain use routing tables. So, and please remember, we are discussing border gateway protocol very short and some portions. Okay, it's a very useful protocol. A lot of descriptions are there, but we will be just trying to see a basic fundamental of border gateway protocol. Now let us take an example and show you how it is, how generally it works, what we do to prepare the routing table. Okay, so
we have 3 ASPs, suppose. This is connected to there are 3 routers. OSPF और RIP का तो मैंने पता नहीं कहाँ से एग्जाम्पल बनाया या खुद बनाया, didn't remember. ओके, बट ये वाला एग्जाम्पल है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल का, ये आपको टॉप डाउन अप्रोच वाली किताब में मिल जाएगा पूरा का पूरा. ओके, ये मैंने वहीं से लिया है. सो 1B and this is connected like this. So this is suppose these are 3 routers which belong to say AS3. Huh? And there are 3 routers which belongs to AS2. तो उसका लीजिए 2A है ये. It's connected to 2C and then 2B. Okay. This is AS2, 3 routers of AS2. There are 4 routers of AS1, suppose 1A, 1B, 1C, 1B. Okay, and this belong to AS1, and AS1, the router 1A is connected to router 3A. Okay, this is through external connection. So this dotted line is showing external border gateway protocol between different routers of different AS. And क्या हुआ भाई, आवाज आ रही है यार. नहीं करके रखते यार अपना. भाई तुम लोग कंप्यूटर के लोग हो, फिर भी कनेक्शन कैसे करके कैसे रखना है उसको वो नहीं जानते. म्यूट करके रखा करो जब तक आप बोल ना रहे हो तो. ओके, चलो किसी का रह गया था. 2A is connected to 3B और 1B. फिर ऑन कर दिया क्या किसी ने? उसको ऑफ रखिए माइक को अपने. अभी तो बंद किया फिर ऑन कर दिया किसी ने, लगता है. बंद रखिए उसको. ओके, सो ये जो डॉटेड लाइन है दैट इज शोइंग एक्सटर्नल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, और जो ये वाली लाइन है दिस इज, और ये वाली लाइन है ये इंटरनल बॉर्डर गेटवे protocol. Now let us see what happens in border gateway protocol here. It uses a prefix to do the advertisement. So let us see how the advertisement, what the advertisement contain. Okay. तो ये था, ये topology समझ में आ गई. There are 3 AS. Each AS contains, AS1 contains 4 routers. They are connected to each other and using internal border gateway protocol for exchange of the information to each other. Obviously at port 179 using TCP.
Then AS2 is there, which is having 3 router, and AS3 is there, which is having 3 router. Now AS1 and AS2 are connected through router 2A and 1B. Okay, and AS1 and AS3 is connected through router 1A and 3A. Okay, this. So now let us see how the advertisement is done. Okay, so border gateway protocol, it uses CIDR. CIDR जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ना, स्लैश नोटेशन जिसमें यूज होता है, तो CIDR प्रीफिक्स यूज करता है. ओके, और जो भी ईच प्रीफिक्स जो है जो यूज करता है वो एक सबनेट को रिप्रेजेंट करता है. ओके, नाउ द एडवर्टाइजमेंट में क्या है, एक तो सबनेट प्रीफिक्स, तो जो सबनेट प्रीफिक्स होगा वो एडवर्टाइज होगा, राइट. तो जब एडवर्टाइजमेंट करेंगे at that time subnet prefix will be advertised with slash value. Okay, तो सबनेट मास्क कितना है उसका वो भी पता रहेगा. तो जो एडवर्टाइजमेंट है that will contain prefix oblique slash x value. Okay, that is subnet prefix. एक तो ये रहेगा और दो चीजें और रही, और बाकी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के एट्रीब्यूट्स हैं बहुत सारे. आई वुड बी लिस्टिंग ओनली 2 एट्रीब्यूट्स, है ना, वो रहेंगे साथ में. और इसमें जो मेन एट्रीब्यूट है जो मैं लिस्ट कर दूंगा आपको, वो है एक तो AS पाथ रहेगा. ओके, मेन एट्रीब्यूट है वो ये है AS पाथ और नेक्स्ट हॉप. ओके, तो ये दो चीजें एडवर्टाइजमेंट में मेन रहेगी, बाकी भी और बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दोस. I'm not going to detail of border gateway protocol. Okay. अभी तक जितना भी है इसमें कुछ आपको फर्क नहीं लगेगा, बहुत सिंपल चीजें हैं. जो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल में एक खास चीज है, वो खास क्या है, वो मतलब इट इज यूज एज एन पैरामीटर, जिसको बोलते हैं कि उस पैरामीटर को बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेफरेंस, है ना. प्रेफरेंस वैल्यू एक होती है जिसको कि द लोकल द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ दैट ISP और of that autonomous system provides. So we'll be discussing that. ये सब है. ये इससे रूट निकालने में, जब हम देखेंगे कि रूट निकालने में कौन कौन से पैरामीटर यूज होते हैं, उसमें सबसे पहला आता है एक वैल्यू दी जाती है जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेट, जिसको आप कह सकते हैं कि दैट हैज बीन असाइन्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर autonomous system, and that value you cannot determine. You do not know what is going to be assigned. Okay, and that has the highest preference. We will be coming to that. So this उसको बाद को देखेंगे. ये अभी देखिए आप, इतना एडवर्टाइजमेंट में यूज होता है. अब सपोज जो हमारे ये AS हैं, suppose AS2 contains the IP address 202.11.8.0/22. So the moment I say
sorry, /22. This means it contains sorry. If you take /24, then there are 4 subnets: 0.8.0/24, 0.9.0/24, 0.10.0/24 and 0.11.0/24. ओके, तो 4 सबनेट हैं इसके अंदर. आप और फर्दर सबनेट डिवाइड कर सकते हैं. इसको हम एक ही सबनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. And then AS3 is suppose is having 202.141.12.0/24 है ना. इसमें देखिए 0.8.0/24 इंक्लूडेड है. 4 सबनेट है अगर आप /24 से करेंगे. दूसरा 0.9.0/24 है. तीसरा 0.10.0/24 है. और फोर्थ है इसमें 11.0/24 है ना. ये चारों की चारों मिला के आपने /22 कर दिया तो एक ही हो गया 8.0/24. दूसरा वाला AS3 है 12.0/24. अब देखिए एडवर्टाइजमेंट. द एडवर्टाइजमेंट ऑफ AS3. ठीक, तो AS3 में जो एडवर्टाइजमेंट होगा that would be 3A will do the advertisement to whom? To 1A. ठीक है, 3A will advertise to 1A. And what 3A will advertise to 1A? The subnet prefix of its own subnet, that is 202.141.12.0. AS3 का जो सबनेट है उस 0.12.0/24. सो स्लैश वैल्यू साथ में एडवर्टाइज होगी. तो एक तो हो गया सबनेट प्रीफिक्स, देखिए एडवर्टाइजमेंट में लिखा था. उसके बाद AS path. Now AS path is, it include AS3. In order to go to AS3, the path is that itself, AS3. Okay, and who is doing that? What is the next stop when 3A is advertising to 1A, right? So for 1A, the next stop is 3A. 3A is next stop. Okay. So this advertisement is now 1A using internal border gateway protocol will advertise to 1B about the same prefix 202.141.12.0/24, right? Or AS that from here it's AS3. और गेटवे कौन सा होगा? 1A. For 1B, the gateway is 1A and will reach through AS3. And now 1B is going to advertise through external border gateway to 2A. That is the router of AS2. ऊपर वाला जो है. Same prefix 202.141.12.0/24. पाथ क्या हो गया? AS3 तो पहले था ही, एंड AS3 के साथ कौन सा पाथ इंक्लूड हो गया? AS1, राइट? सो AS1 एंड ये पाथ हो गया AS3 AS1 और नेक्स्ट हॉप कौन सा हो गया? is 1B. So if we want to go from 2A, ये ऊपर वाला राउटर है 2A, right? In order to go to AS3, the path is going to be AS1 and then AS3, right? That is the path. ये path हो गया और gateway हो गया 1B. So this is how
the subnet 12.0 is going to be advertised. अब इसका देख लीजिए, एडवर्टाइजमेंट ऑफ, यहाँ लिख दें, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, AS2 एडवर्टाइजमेंट ऑफ, इसको यहाँ कर देते हैं, ऑफ AS2 वाले का एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए कितना होगा, 2A से कहाँ होगा, 1B, 2A to 1B, राइट, और ये हो गया 202.141.8.0/22, राइट, और AS2, राइट, पाथ हो गया AS2 और नेक्स्ट स्टॉप हो गया 2A, 1B के लिए 2A नेक्स्ट स्टॉप हो गया, 1B ये इंटरनल वाला हो गया 2, 1A प्रीफिक्स हो गया 202.141.8.0/22, है ना, तो /22 है जिसमें 4 सबनेट, अगर 24 वाले देखेंगे तो 4 है और बाकी और आप बढ़ाते जाइए तो और सबनेट हो जाएंगे उसमें क्या है, और पाथ हो गया AS2 और नेक्स्ट स्टॉप हो गया 1B, and then 1A will do the advertisement through external gate border gateway protocol to 3A, 202.141.8.0/22, पाथ हो गया AS2 और फिर AS1 और गेटवे हो गया कौन सा, 1A. Okay, so 1A can transfer to 3A, right? For 3A, in order to go to AS2, the path is what, AS1 and AS2, right? And this is the prefix, this is the path, and next stop is 1A. We'll transfer it to 1A. Okay, so this is there, and one more thing which is required here. If you remember in RIP, we were having a looping problem, and here the looping problem is avoided through the AS path. Okay, so थोड़ा सा इसको नीचे खिसका लेते हैं. Okay, यहाँ पे अच्छा डालेंगे. So लूप को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि when a router receive advertisement which contain its own AS number, right? Then router rejects that advertisement, rejects that advertisement because it forms a loop. जब भी आप डायनेमिकली रूटिंग टेबल बनाते हैं, so in your algorithm you need to take care of कि लूप ना बने.
और इंटरनेट के ऊपर क्योंकि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल चल रही है तो वहां पे भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि लूप ना क्रिएट। लूप क्रिएट होने का मतलब यही है कि एक पैकेट 3A ने 1A को दिया, 1A ने वापस 3A को दे दिया, 3A ने वापस 1A को दे दिया, दैट इज इनफाइनाइट लूप। ओके, जब मैं आपको आईपी हेडर समझाऊंगा, वेयर आईपी हेडर इटसेल्फ कंटेन्स अ फील्ड, जो अगर कोई पैकेट आपने रूटिंग सही की, सब कुछ सही किया, आफ्टर दैट ऑल्सो किसी एरर की वजह से अ पैकेट कैन गो इनटू अ लूप ओवर द इंटरनेट। और आप सोचिए अगर बहुत सारे पैकेट इंटरनेट पे लूप में फंस जाएंगे एंड दे रिमेन फॉरएवर ओवर द इंटरनेट फॉर इनफाइनाइट टाइम, then internet is going to be choked by those packets which have gone into the loop. तो जब मैं आपको आईपी हेडर बताऊंगा, वहां पर एक फील्ड होता है जिसको बोलते हैं टाइम टू लिव। IPv4 में टाइम टू लिव बोला जाता है उस फील्ड को, और IPv6 में ऑप काउंट बोलते हैं। सो दैट फील्ड क्या होता है कि whenever a packet is forwarded by a router, that field is having a fixed integer number. Say it is having 64, suppose, right? So every time the packet is forwarded by a router, that number is reduced by 1, and when the number reaches to 0, packet is not forwarded by the router, packet is dropped by the router to avoid a packet in infinite loop. If a packet is in infinite loop, what will happen? One router will forward it to other router will forward it back to maybe to the same router, or after once it goes through the loop and then again is returning back to the same router. Okay. So during this process of forwarding of the packet, every router, what it do, it decreases that value, and whenever the value reaches to 0, that packet is dropped by the router. जहां पर भी वो 0 हो जाएगा, वो राउटर उसको ड्रॉप कर देगा। तो इनफाइनाइट लूप में पैकेट अगर फंस गया है किसी भी वजह से, आप प्रिकॉशन ले रहे हैं, लाइक हियर आई एम सेइंग दैट टू अवॉइड द लूप एएस पाथ को यूज करते हैं। अगर किसी पाथ में उस राउटर का एएस नंबर खुद का भी इंक्लूडेड है, इसका मतलब कि पाथ में लूप है, सो दैट एडवर्टाइजमेंट इज रिजेक्टेड। ये एक प्रिकॉशन है, बट in spite of all precautions, there may be, because of some mistake of somebody else or some administrator, a packet can go into an infinite loop. Okay, तो उसके लिए अलग से प्रोविजन है आईपी हेडर में। हम लोग जब आईपी हेडर देखेंगे तब देखिएगा कि वो वहां पे उसको एक फिक्स वैल्यू रहती है जो डिक्रीज होती जाती है, और वो फाइनली ड्रॉप हो जाता है पैकेट। ओके, तो ये हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट। अब जो रूट सिलेक्शन होता है वो किस बेस पे किया जाता है? सो देयर आर 3 रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ द रूट। तो रूट सिलेक्शन जो है, ऑब्वियस है कि स्मॉलेस्ट पाथ, यहाँ पे भी जो स्मॉलर पाथ होगा उसको चूज करेंगे, और हाँ, पर उससे पहले एक और चीज है जिसको बोलते हैं लोकल प्रेफरेंस वैल्यू। तो फर्स्ट है सेलेक्ट रूट विद हाईएस्ट लोकल प्रेफरेंस वैल्यू। Preference value. Okay, and this is given by local administrator, not administrator, administration, given by local administration or the authority which is managing that ISP.
So this is the first thing. So in order to select a particular route, whether that route should be used or not, and if it is used, what is the priority of that route? This is decided by the highest value which is given by the local administration. Okay. इसका मतलब सीधा सा ये है कि मान लीजिए रिलायंस ने और एयरटेल ने एक रूट एक दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए बनाया, एक रूट पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए दो राउटर के अपने दो राउटर्स के बीच में है उनके, तो वो यूज होगा कि नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन देयर एडमिनिस्ट्रेटर्स कि भाई उसको यूज करें, कितना करें, कब करें, कितनी रिलायबिलिटी है, कितना पैसा चार्ज होगा, वगैरह वगैरह, है ना। जनरली इसी पे बेस होता है कि उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग कितनी है एक दूसरे में। देखिए कंपटीटर भी हैं वो और उन्हें एक दूसरे को सपोर्ट भी करना है, दोनों ही चीजें हैं। आईएसपी है, कंपटीटर भी हैं एक दूसरे के, एंड they have to provide the access also to the users. Okay, so it all depend upon their local policies कि उनके आपस के रिलेशन कैसे हैं, चार्जिंग आपस में कितना है, वगैरह वगैरह। so ये पहली चीज है जिसके ऊपर रूट का सिलेक्शन डिपेंड करेगा जब दो आईएसपी या तीन आईएसपी एक दूसरे के ट्रैफिक को पास करेंगे। ओके, अब विद सेम लोकल प्रेफरेंस वैल्यू अगर वो सेम है तब सेलेक्ट रूट विद दो शॉर्टेस्ट पाथ, एएस पाथ, शॉर्टेस्ट एएस पाथ। ठीक है, तो अगर दोनों वैल्यू सेम है तब आप आएंगे अपना जो टेक्निकल बात है कि भाई छोटा वाला रूट सेलेक्ट करिए, ये टेक्निकल है। ओके, तो पहले वाले में कोई टेक्निकल लेना देना नहीं है, वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, एक दूसरे के ऊपर रिलायबिलिटी कितनी है इस पे डिपेंड करता है, पैसा कितना चार्ज कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है, वगैरह वगैरह है, बहुत सारी है, पॉलिटिक्स पे डिपेंड कर सकता है। तो वो एक अलग मसला है विच इज टेकन एट द हाईएस्ट लेवल। सबसे पहले वो है, फिर जब सेम है दो रूट्स के लिए तब जो भी छोटा है उसको, एंड अगर पाथ सेम है विद सेम एएस पाथ लेंथ, अगर एएस पाथ की लेंथ सेम है देन लेंथ सेम है अगर, देन सेलेक्ट रूट with closest next hop, closest का मतलब है with least value, closest का मतलब है with least cost। दोनों में जो क्लोजेस्ट नेक्स्ट स्टॉप हो उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा, लेंथ सेम है तो। ठीक, तो ये हो गया आपका रूट सिलेक्शन। तो ये तो आपका बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के अंदर ये हुआ। अब जैसा कि मैंने बोला आपको कि बॉर्डर गेटवे में जो पॉलिसीज हैं ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर having more importance than
other factors. Technical factors पीछे हैं, and ये जो आपका नॉन टेक्निकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स पहले हैं. ओके, अब आप देखिए दो एग्जाम्पल लेते हैं टू शो कि यार ये कैसे होता है. कुछ बातें, मान लीजिए दो सर्विस प्रोवाइडर हैं, बी बैकबोन प्रोवाइडर हैं और सी, and we have given a connection to X. She has given a connection to Y. मान लीजिए ये X जो है वो MNIT है, तो बैकबोन प्रोवाइडर BSNL ने दिया MNIT को, और C मान लीजिए रिलायंस है, तो it has given to IIT इलाहाबाद. Now X उसने दो कनेक्शन लिए, BSNL से भी ले लिया और एक ये कनेक्शन ले लिया उसने C से. Now see, B want to pass its traffic to Y. Can it use X? अगर आप कनेक्शन की बात करें, there is a connection from B to X and then from X to C and then C to Y. So can B transfer its traffic to Y through X? Obviously, X is not going to allow B to pass its traffic, which is destined for Y. MNIT क्यों अपना सिर दर्द लेगा गई कि BSNL का सारा ट्रैफिक जो Y को जा रहा है वो अपने से पास करे? नहीं लेगा ना. That is a administrative decision. So what X do for avoiding this situation? क्या करेगा X? तो X क्या करेगा? Do not advertise path to Y to B. जो आपका पाथ है Y वाला through C, that is not going to be advertised by the router of X to the router of B using border gateway protocol. Okay, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है. एक और एग्जाम्पल देखिए, तो ये दोनों एग्जाम्पल टॉप डाउन में हैं, अगर किसी को देखना हो तो देखिए ये सी ए, यहाँ पे बी और सी जो है वो बैकबोन प्रोवाइडर है. ISP से हैं, और X और Y जो है वो सब्सक्राइबर है इनके. सिमिलरली W and that is connected to A, connected to B, B is connected to C, है ना. A और B ये इसको भी ऐसे और B is connecting to X, to C is connecting to X, and this is connecting to Y. So A, B and C ये बैकबोन प्रोवाइडर है. और W, X and Y ये सब्सक्राइबर है. ठीक है, कस्टमर्स है. ठीक है, अब देखिए कि ये जो पाथ है, कौन सा पाथ? बी अगर एडवर्टाइज करेगा कि नहीं इस पाथ को, बी एडवर्टाइजमेंट ऑफ पाथ, व्हाट पाथ?
B A W to C. B should advertise the path BAW to C or not. B can reach to W through A. C do not have a connectivity to W. Right? So B, should it advertise the path to C? Obviously, it depends कि advertise करे कि ना करे. If B is a backbone provider, why should it worry about providing the path to W to C? But C want to send something. C want to, like, it has provided a connection to X and Y, and X and Y may be interested to connect to W. So C को चाहिए वो path. But then what has to be done? C has to talk to B. कि भाई, और जैसे ही C ने B से बात की, B कहेगा भाई पैसा दो. कहेगा कि नहीं? नहीं पैसा दोगे तो हम पाथ देंगे नहीं W के लिए आप. So there should be. So B is going to advertise this path to C only on conditions. And generally that condition is charge करेंगे, किस वक्त हाई करें, किस वक्त कम करें, क्या करें, all those type of things may include. And this type of situations are there. Okay. तो ये पॉलिसीज जो हम लोग ने बात की कि रूट डिटरमाइन करने में पॉलिसीज वो जरूरी है. तो दैट मे बी देयर. तो ये हुआ. किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताए, वरना फिर ये बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल बहुत शॉर्ट में है, थोड़ा केवल बेसिक फंडामेंटल है. सर आई हैव अ डाउट. बताओ. तो सेम टाइम पे अगर बी को वाई से कम्युनिकेट करना हो तो सी भी तो बी को चार्ज कर सकता है ना. सेम टाइम पे अगर किसको करना हो बात, बी को वाई से बात करना हो, बी को वाई से बात करना हो, हाँ, तो वो सी के थ्रू जाएगा. तो सी बी को चार्ज कर सकता है ना. हाँ, सी तो सी विल चार्ज बी डेफिनेटली, क्योंकि वाई पे भी बी का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. हाँ ठीक है, वो चार्ज करेगा तभी कनेक्शन देगा वाई. तो उधर वाला, इसीलिए दोनों को एडवर्टाइज पाथ देना पड़ता है एक दूसरे को. दैट्स व्हाई आई सेड कि आपसी जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपसी जो शर्तें हैं, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन, डू नॉट, देयर इज नो टेक्निकल थिंग्स इन्वॉल्व्ड. वही लोकल प्रेफरेंस वैल्यू वही है ना. वो ठीक है, वो तुम ठीक कर रहे हो कि बी को अगर वाई को कम्युनिकेट करना है कुछ, तो इट हैज टू गो थ्रू सी एंड देन सी इज गोइंग टू चार्ज. सिमिलर फैशन बी अगर डब्ल्यू वाले पाथ पे चार्ज कर रहा है तो सी वाई वाले पाथ पे चार्ज करेगा. हाँ, दैट्स ट्रू. तो और किसी का कुछ हो तो बताए. Excuse me, sir. हम्म. Sir, how is the AS part decided in the example when we have to transfer data to AS3 in the previous example, while you are explaining the BGP attributes? AS path. Yes, sir. Yes, sir. The one. Actually, in determining AS path, sometimes अभी तो ये सिंपल ही है कि भाई AS3 पे अगर जाना है तो आपको AS2 को जाना है AS3 पे, तो AS1 और AS3 के थ्रू जा पाएगा, है ना. और कोई पाथ है ही नहीं. बट मे बी कि 2C कनेक्टेड हो 3C से. ऐसा हो सकता है कि 2C
There is a path between AS2 and AS3 directly. 2C is connected to 3C, something like that. हाँ? तो अगर उस तरह का कोई पाथ अवेलेबल है दूसरा, तो फिर शॉर्टर पाथ लेंगे दोनों में से। एक तो हो गया AS2 to AS3 डायरेक्टली है, तो AS3 पे जाने के लिए AS2 से अगर अब मैं यहाँ पे कनेक्शन करूँ ना, तब शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाए। ये वाला कनेक्शन अगर यहाँ कर दें, सपोज ये दिस इज कनेक्टेड टू हियर, 3C से यहाँ कनेक्शन हो गया, अगर मान लीजिए 2C से। ओके, तो दो पाथ हो गए। वन इज when any router of AS2 is trying to reach to AS3, so one path is through AS1 and AS3, the other path is directly AS3 through this 2C. Okay, then the shorter one is to be selected. तो ये पाथ है। पाथ का मतलब है ये 2C और 3C डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये मतलब हो गया ना पाथ का। वैन कनेक्शन है वहां पर। Sir, when we say that the path is AS3 or it is AS2, what do we actually mean? That means there is a hop distance between those two routers to reach to that particular autonomous system, that particular ISP. यही मतलब है। Sir, in the last row of the example ADV at AS3, why have you written AS3 and AS1 together? AS3 and AS1. AS3 and AS1 ये कहाँ पर था आपका? 1B to 2A था ना, 1B to 2A. So when 1B is advertising about this prefix, 1B के पास ये prefix है, जो prefix belong कर रहा है AS3 को, ठीक है ना? Prefix है is 12.0/24. So 1B is telling to 2A that if you want to reach to this prefix, you can, right? The next hop will be 1B itself, right? And the path is this. If the packet first will go to AS1 and then will reach to AS3. So that includes these two things. This includes these two AS in the path. ठीक है ना? दो ISP के थ्रू जा रहा है, एक AS3 पे पहुंचेगा और AS1 के थ्रू। तो वो बता रहा है कि भाई आप जो है इसी स्टेशन से होके जाएंगे। एक तो राउटर है, राउटर एक इटसेल्फ है, लेकिन वो राउटर किस AS को बिलोंग कर रहा है, तो AS उसको बता रहा है पाथ को। Sir, from 1A to 1B. 1B is the next hop. But in order to transfer the packet to that particular prefix, right? 1B is the next hop. So 2A, when it try to transfer the packet to that is 1B. Okay. Now we need to find out the path क्या है, कौन कौन सी AS included है उस path में। तो AS1 included है, AS3 included है। तो distance is in terms of AS, कितने AS के थ्रू, कितने ISPs के थ्रू वो पैकेट पर्टिकुलर पास होगा, वो डिस्टेंस बता रहे हैं हम। इसमें आप कह सकते हैं कि ये हॉप नहीं है, क्योंकि हॉप में हम जनरली राउटर को काउंट करते हैं, तो उस सेंस में हॉप नहीं है। लेकिन आप अगर इस सेंस में लें कि AS को हम हॉप मान लें, तो वो उसको आप ले सकते हैं। In case we consider कि this AS is itself, we consider the whole AS as one hop, right? Then you can consider कि यार ये बात है। भाई ऐसे समझिए ना कि आपको अगर US जाना है तो फ्रांस होके जा रहे हैं, कि आप ऑस्ट्रेलिया होके जा रहे हैं, तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को एक पूरा वो मान लें, इस तरह से बात समझ लीजिए, ठीक है ना? That is the meaning. Sir, in the second row from 1A to 1B, why have you written AS3 in that column? Like,
if that is it's the only that is the only last AS which is in that path. तो उसको इसलिए इंक्लूड कर लिया. जब आप कहीं से तो शुरू करेंगे ना, जब आप कोई पाथ बनाएंगे तो कहीं ना कहीं से तो शुरू करेंगे उसको पाथ को, तो वो AS3 पे हम दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन, तो उसको इंक्लूड कर लिया. दैट्स इट. आप अगर दूसरा कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं कि नहीं उसको नहीं इंक्लूड करेंगे, वन एक हॉप कम को इंक्लूड करेंगे, तो आप AS1 को रख दीजिए, तब वहां से हटा दीजिए. ओके. व्हेन यू से कि पाथ में कहां तक है, तो कहीं से तो पाथ शुरू करेंगे. फ्रॉम समवेयर यू नीड टू स्टार्ट दैट पाथ, तभी तो हम कहेंगे कि यार ये पाथ है ना. एंड दैट got इज it, फॉर sir. द पर्पस ऑफ कि भाई कितनी जगह से होके हमें जाना पड़ेगा. ये तो सीधे है, वहां पर AS3 पे पहुंचना है, वो सीधे है. द ओनली थिंग इज कि 3A को दे देगा और वो पहुंच जाएगा. पाथ आप कहीं ना कहीं से शुरू करेंगे ना पाथ को. अगर आप Sir, what AS3 is the नहीं रखेंगे. हाँ बताओ. what is the exact implication of ADV, sir? I mean, what is the significance of the word advertise here in this entire example? What? The advertisement? Oh, yes, sir. I mean, what does it actually imply? The advertisement just is for telling about a particular subnet, that this particular subnet is can be reached how. The advertisement is for that. A particular subnet is there. If anybody want to reach to that particular subnet, how you can reach? That information we are trying to spread over the internet. Understood, sir. Thank you. Advertisement is for that. ठीक है, फिर चलिए तो बंद करते हैं फिर. चलिए ठीक है.